Good afternoon, guys. I am Vimal Parikh. I will teach you mathematics. Due to coronavirus, all colleges and schools are closed. So, government has requested to start the online classes. So, I will teach you mathematics by the reference of Asta International Public School. Okay, please stay home and stay safe because अगर आप स्वस्थ हैं तो हम सब स्वस्थ हैं और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, आई विल टीच यू इन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। हेडिंग विल बी मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स, in NCERT syllabus, matrix has very useful because it considers 7 to 8 marks. Otherwise, it is a basic topic of algebra in BSc and MSc. Totally algebra is based on matrix in BSc and MSc. Okay. Otherwise, in IIT JEE, matrix have a value because it consider 3 to 4 marks. Because in mains and advanced levels, we find 1 to 2 questions in mains and advanced. So it become a useful topic. Okay, so listen carefully. It is a very easy topic, but in meaning it has very useful. Okay, by definition, what is the matrix? A matrix is a rectangular arrangement of numbers and functions. As like numbers and functions, number will be real and complex both. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स और फंक्शंस का जिसमें नंबर्स रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स बोथ आर रिक्वायर्ड. ओके, एंड दीज नंबर्स आर क्लोज्ड बाय ए ब्रैकेट. दो these types of arrangement is called a matrix. Matrix always will be denoted by a capital letter of alphabet, as like A. 1 2 3 4 are arranged in rectangular arrangement and closed by a capital bracket, and it will be denoted by capital A. So this is called a matrix. Okay, otherwise A, B, C, D, 1 2 3 4 2 3 1 5 -2 and 7, these all are a matrix. In matrix we consider row and column. What is the row and what is the column? Okay, listen. 1 and 2, these lies on a horizontal line. Okay, which elements are lies on horizontal line? These are called always in a row. Okay, and which elements are lie on a vertical line? These type are called a column. Okay, so listen, 1 and 2 are in horizontal, so this is a row. 1 and 3 are in vertical line, so this is a column. Okay, in matrix B, 2 3 1 5 -2 and 7, 2 3 1 are in a row and 2 5 in a column, 2 3 3 -2 1 7 are in a column. Okay, we get an example. A matrix E. Okay, elements are 1 5 7 9 3 4 6 8 5 3 2 1. Okay, R1 R2 R3, these all are in row. Okay, and these are all are column. Okay, after this, if यदि हमने रो एंड कॉलम को अच्छी तरह से समझ लिया है तो अब आगे अपने को समझना है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ओके, नंबर ऑफ रोज मल्टीपल इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके,
अपने को मल्टीपल नहीं करना है, अपने को ये डिनोट करता है कि ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ओके, जैसे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। बाय एग्जांपल, ए मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, देयर इज R1 and R2, there are 2 rows and C1 and C2 2 columns, 2 into 2. Okay, then the order of a matrix of A will be 2 into 2, in matrix B 2 into 3, in C 2 into 2, and in D 2 into 2. Okay, in matrix E 1 1 2 3, 3 rows and C1 C2 C3 and C4, 4 columns. Okay, 3 into 4. So the order of a matrix E will be 3 into 4. Okay, pay attention. Always row will be first. After all, we will write column. Okay, after this, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या क्या है कि एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं। ओके, यानी 1 2 3 4, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। 1 2 3 4, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अदरवाइज वी सी दैट in a matrix A which has 2 row and 2 column is equal to 2 into 2 is equal to 4. We see 1 2 3 4, there are 4 elements. 2 into 2 is equal to 4. For these 4 are called number of elements. Okay, in matrix B 2 into 3, 2 into 3 is equal to 6. Number of elements will be 6. As why in matrix E, total number of rows is 1 2 3 and columns 1 2 3 4. 3 into 4 is equal to 12. 12 is called number of elements will be 12. Okay, after these types of elements, there are 7 to 8 types of a matrix. Okay, number 1 is column matrix. What is column matrix? A matrix which has only one column, which has only, listen carefully, which has only one column. These types of matrix is called column matrix. Okay, listen, 1 2 3 4, there are R1 R2 R3 and R4, but there are 4 rows but columns is C1, only one column and rows are 4. Okay, then the order of matrix will be 4 into 1. Okay, 4 rows and 1 column. These types of matrix will be column matrix. Number 2, row matrix. It has only one row. Okay, -1 by 2, 5 4 and 2, there is one row R1 and column 1 C1 C2 C3 and C4. Okay, there are 4 columns and 1 row. Okay, these types of matrix called row matrix. Okay, number 3, square matrix. There is always number of rows and number of columns will be same. Okay, number of rows and number of columns will be same. Okay, for example, A is a matrix 1 2 4 5, R1 R2 2 rows and C1 C2 2 columns. Okay, 2 into 2. Okay, these types of matrix called square matrix. M is equal to n. For example, A is a matrix and M into n are order of matrix. So M is equal to n will be in square matrix. Okay, order will be same. If A is a square matrix, then 1 5 7 9 5 4 1 3 2. Okay, these elements are lie in a diagonal line. Okay, these called all diagonal elements. Okay, there are R1 R2 3 rows and C1 C2 3 columns. So order will be 3 into 3. So diagonal element will be 1 5 and 2. 1 5 2. Okay,
आगे 4 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स. In a diagonal matrix, non-diagonal elements will be 0. Okay, listen carefully. नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट्स नहीं है वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, शून्य होंगे. अदरवाइज इन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी नॉट 0. ओके, फॉर एग्जाम्पल -1 0 0 5. ओके, -1 और 5, these elements are not 0 and 0 0 non-diagonal elements are 0. Okay, these types of matrix are called diagonal matrix. A scalar matrix, listen carefully. In a scalar matrix, a diagonal matrix, all diagonal elements are equal, then it's called a scalar matrix. Okay, listen. अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स है वो अगर सेम हो यानी एक जैसे हो तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है. जैसे -1 0 0 -1 -1 -1. ओके, डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सो दीज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, ए स्केलर ओके लिसन, बाय दीज टू matrix, diagonal and scalar matrix. A scalar matrix always will be a diagonal matrix. Okay, a scalar matrix will be diagonal matrix, but this is not compulsory that a diagonal matrix always not be a scalar matrix. एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगी, बट एक डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स हो ये कोई कंपलसरी नहीं है. आगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी यूनिट. ओके, ए स्केलर एलिमेंट्स, अगर एक स्केलर एलिमेंट्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज विल बी 1, देन these type of matrix will be called unit matrix. Then we can say, okay, unit matrix will be always scalar matrix, but always this is not compulsory that a scalar matrix will not be always a unit matrix. एक यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगी, बट एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा यूनिट मैट्रिक्स हो ये कोई जरूरी नहीं है. ओके, आगे आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अपर एंड लोअर. ओके, अपर मैट्रिक्स एंड लोअर मैट्रिक्स. इफ all elements which are lie in a triangular, upper elements of are not 0 and lower elements are 0, these types of called upper triangular matrix. Okay, आगे आता है lower triangular. In lower elements are not 0 and upper elements will be 0. Okay, these are all types of 7 to 8 types of a type of matrix. Okay, listen, in unit matrix if we consider Aij m into m, okay, if the value of matrix will be 0 if I यानी I is not equal to j, यानी कि इनका ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होगी. अगर यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 होगी अगर उनके ऑर्डर सेम है, I इज इक्वल टू j. very very important. Okay, these all are type of matrix. Okay, so thank you very much. I teach you type of matrix, and if you have any doubt in this topic, please comment. Okay, thank you, bye bye.